Okay, so Assalamu alaikum. Well, we are back with another book review slash book dissection. The book that we are going to explain slash dissect this time is The 5 a.m. Club. It's a book by Robin Sharma, and it is a self-help book, and this is about how we can elevate our mornings, how we can elevate our lives by getting up earlier, just by having a good morning routine. And it is all about establishing a good morning routine and waking up earlier. And trust me, this is going to have an impact, because I used to read this book in my second year of MBBS, and I had achieved a very good morning routine, and it was actually impacting my life. And then I just forgot about it, and I just went back to my old patterns. But there's always time for improvement. There's always time for getting back to our good healthy habits, right? So I'll be reading this book, and I'll be explaining the important crux or the important points of this book. So let's get started. So ओके, सो दिस बुक हैज़ गॉट 17 चैप्टर्स, और हम हर चैप्टर को हर एक वीडियो में कवर करेंगे. जो पहला चैप्टर है दैट इज़ द डेंजरस डीड. अच्छा, रोबिन शर्मा की ना एक बात है कि इनकी एक तो बुक के टाइटल्स बहुत यू से इंट्रीगिंग होते हैं. लाइक यू एक्चुअली बाय दैट बुक बिकॉज ऑफ द टाइटल कि यस दिस टाइटल इज़ गुड. ठीक है. और बुक्स सेल्फ हेल्प होती हैं, और इनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये हमेशा किसी ना किसी स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. like in this book, it's a story of an entrepreneur, and it's a story of a painter who meet a very strange personality, और फिर बाद में उनको पता चलता है that he was guru or he was a self help coach. ठीक है, पहले they don't know that, right? Okay, so but through the course of that story, during the course of the story, Robin Sharma teaches us different habits, different techniques, different tools that we can apply in our डेली लाइफ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, राइट? तो वही हम देखेंगे वन बाय वन, और उन्हीं को हम डेली लाइफ्स में अप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे साथ साथ. एंड आई विल बी डूइंग इट विद यू गाइस बिकॉज आई एम रीडिंग इट अगेन विद यू. ठीक है, तो इट्स अ सेशन ऑफ रीड विद मी. ठीक है, आई एम रीडिंग इट विद यू, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू सो दैट आई कुड अप्लाई इट इन माई लाइफ एज वेल. सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ द डेंजरस डीड. अच्छा, डेंजरस डीड के चैप्टर में ना जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो इंट्रोड्यूस होता है. नाउ आई डोंट हैव एनी पिक्चर्स, बट आई जस्ट ट्राई टू मेक यू गाइस इमेजिन समथिंग. ठीक है, तो जो पहला हमारा कैरेक्टर है इस बुक का, that is an entrepreneur. ठीक है, she is an entrepreneur, and she has a tech company, and she has been very successful at it. but recently ये हुआ है कि जो उसका we know कि every country is being managed by a board of directors. अब वो उसको you can say they're trying to take her off of her job. ठीक है, वो हालांकि वो कंपनी उसकी अपनी है, उस लेडी की, उस entrepreneur की, but they are trying to take her off the company. वो they want to take her down. ठीक है, they want to take her job, and they want to expel her, and they want her to find another job, due to which she is like quite depressed, and she is quite disturbed, and she's so disturbed, she's so depressed that she wants to take her life. and she's just thinking that what can she do कि उसकी लाइफ भी एंड हो जाए और एक इम्पैक्ट भी आए, और मतलब जस्ट स्विफ्टली जल्दी से उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए. तो शी थिंक्स अबाउट टेकिंग a bunch full of sleeping pills. ठीक है, that's what she thinks, and she calls it the dangerous deed. So she's in her room in a hotel, and she's thinking about taking these pills because she's so depressed, she's so down. and what really happens is, just before she's about to take the pills, she looks at a very a pamphlet, a ticket, and the ticket is to a personal optimization conference. Okay, she takes a look at that ticket to personal optimization conference, and this ticket has been given to her by her mother, and she just thinks that whether she should commit suicide, or she can just go to this conference and see if she experiences a breakthrough. and at this point she is like she just commits कि ठीक है, मैं जाती हूँ उस कॉन्फ्रेंस पर, अगर तो मुझे कुछ ऐसा पता चल गया that I might be able to apply in my life, and I might be able to get out of the trouble I'm having, so I might not be needing to commit suicide, right? but अगर कुछ नहीं होता तो the option of that committing suicide, which is very bad, definitely will always be on the table, right?
तो अभी बस यहीं तक हमने देखा है दैट अब शी इज़ इन हर होटल रूम, शी इज़ रियली डिप्रेस्ड एंड शी इज़ लुकिंग एट दिस पर्सनल ऑप्टिमाइजेशन कॉन्फ्रेंस, और यहीं पे पहला चैप्टर एंड हो जाता है। दिस इज़ अबाउट द डेंजरस स्ट्रीट। तो ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन भी हो गया है, ठीक है। और साथ ही हमने वो भी देख लिया है कि पहले चैप्टर में क्या क्या बातें हुई थी। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। अच्छा, तो विद दिस द फर्स्ट चैप्टर गेट्स एंडेड, और हम इसके बाद फिर सेकंड चैप्टर देन थर्ड, वी हैव अ टोटल ऑफ 17 चैप्टर्स, सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी, बट it will be very interesting and it will be very engaging. So yes, that's all for now. Thank you so much for watching this video. Like, subscribe, share and take care. Allah Hafiz.